Today we are going to start a new topic, that is playing with numbers for class 6 in mathematics. Here we have to study with some numbers. We have studied about the factors and multiples in previous classes. Previous classes means class 5. All of you have studied about the multiples and factors. Here we shall revive them and extend and study to include some new topic. जैसा कि हम सभी जानते हैं इन क्लास 5 में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में स्टडी की. नाउ वी हैव टू स्टडी फैक्टर एंड मल्टीपल्स इन एक्सटेंड and we have to add some property in factors and multiples. First of all, we have to know the definition of factor and multiples. So first we start the definition of factor. What is factors? Any number which is an exact divisor of a given number is called a factor of the given number. Any number which is an exact divisor, of a given number is called a factor of the given number. कोई भी नंबर किसी दी गई नंबर को अगर पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड करती है तो वो नंबर उस नंबर का जो है एग्जैक्ट डिवीजर कहते हैं या फैक्टर. फॉर एग्जांपल 5 यहाँ 2 नंबर्स हैं 5 एंड 15. 5 जो है 5 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली. 5 3 जा 15. सो 5 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली क्योंकि 5 जो है 15 को पूरी तरह से एग्जैक्ट डिवीजर मींस there is no reminder should be 0. Reminder 0 होना चाहिए. So we can say that 5 is the factor of 50. Any number which divides the given number. For example 15 is divided by 1, 3, 5 and 15. 15 is divisible by 1. 15 is divisible by also 3, 5 and 50 is also divisible by 15 also. So 1, 3, 5 and 15. These are the factor of 50 because all these numbers divide 15 exactly. So 1, 3, 5, 15 are the factor of 50. So we can say that a factor of a number is an exact divisor of that number. किसी नंबर का कोई भी नंबर किसी नंबर को पूरी बार डिवाइड कर देती है तो वह नंबर उस नंबर का डिवीजर होता है. जैसे हम 15 को अगर 5 पूरी तरह से 15 को डिवाइड करता है तो 5 क्या है? डिवीजर. 5 is factor because 5 is a factor of 50 because 5 divides 15 completely. क्योंकि 5 जो है 15 को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो 5 क्या है? फैक्टर. 3 क्या है? 3 is also factor because 3 भी 15 को पूरी तरह से डिवाइड करता है. 15 भी डिवाइड करता है. 15 1 जा 50 and 1 is a factor of 50 because 1 is a factor of every number because 1 when we divide any number by 1 the answer is same. So 1 is the factor of every number. So here any number which a factor is the number a factor of a number is an exact divisor of that. जो उस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो नंबर क्या कहलाती है? डिवीजन. So each of the numbers here 1, 3, 7, 21. It is 5 example of 20 because we divide 21 by 1, 1, 21, 2,
1 1. There is no remainder, so 1 is a factor. And it is 3 21, 3 7 ja 21. So say 3 is also exact divisor, so 3 is the factor of 21. Next is 7. 7 we divide 21, 7 3 ja 21. So remainder is 0. So 7 also divides 21 completely. So 7 is also divisor of 21. So we can say that 7 is the factor of 21. At 21 divided by 21 on the 21. So 21 also divide 21. So 21 is exact divisor. So we can say that 21 is the factor of 21. So here we study the factor. Now come on the second topic, multiples. What is the multiples? A multiple of a number is a number obtained by multiplying it by a natural number. Multiples is the number when we divide any number by it with natural number. What are natural number? 1 2 3 4 and etc. up to infinity. तो काउंटिंग नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ये नेचुरल, because all of you have studied about the natural number in previous classes. So here if you multiply by any number with natural number, suppose that we take a number 3 हमने लिया. अब 3 का मल्टीपल्स हमें मालूम करना है. 3 का हमें नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करना है. 3 1 जा 3, ये मल्टीपल्स हो गया. दूसरा 3 का दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12. In this way, if any number is multiplied by natural numbers, then the answer that we get is called multiples of that number. A multiples of number is a number obtained by multiplying it by a natural number. किसी नंबर का मल्टीपल्स हम तब प्राप्त करते हैं जब उस नंबर को नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करिए. We see that these are natural number. We choose a number 3. We multiply 3 by 1, by 2, by 3. So 3, 6, 9 and 12. They are the multiples of 3. What is the multiples of 3? 3, 6, 9. Because 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15. In this way you can get many multiples of a number. So in other words you can say that a number is said to be multiples of any of its factor. In other words, a number is said to be multiples of any of its factor. Suppose that 50 is a number or 20 is a number. 20 is a number. It's a factor. 21 का factor क्या है? 1, because it is divisible by 1. 1 से भी divide हो सकता है. And 3 7 जा 21. 3 7 and 21. These are factor. So a number said to be multiples of any of its factor. This is 21 is a multiple. किसका multiples है? 1 का भी multiples है, 3 का भी multiples है, 7 का भी multiples है, 21 का भी. जब 1 में 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा. मतलब किसी नंबर को अगर नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो मल्टीपल्स होता है. और जो नंबर जो जिस नंबर को हम लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए वो नंबर एक फैक्टर होता है. तो एनी फैक्टर नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल्स ऑफ एनी ऑफ इट्स
फैक्टर, जो मल्टीपल्स होता है a नंबर का said to be multiples of any of its factor, किसी भी फैक्टर का मल्टीपल्स वो नंबर होती है, अगर उसको फैक्टर है उस फैक्टर का मल्टीपल्स कहा जाता है। So we here we have to note some important fact on factors and multiples. It is very important for all of you. So multiples. Here we have to know the multiples 5, 10, 15, 20 are multiple PLE. Multiple. These are factors. A multiple of 5. 20 are multiples of 5. R, you can say write this R multiples of 5. These numbers 5, 10, 15, 20 and etc. The number that we get by multiplying in 5, that is called multiples of 5, because 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, because 5 is the number and we get the multiples of 5. If we multiply any number by natural number, we all of us know that natural number are 1 2 3 up to infinity. So 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 55. So 5, 10, 15 and 20 are the multiples of 5. So all the factors, they 1 2 3 4 divide multiples of a factor. So these are the multiples of factor. So next is multiples. If a number p, if a number p divides a number q exactly, p divides a number q exactly, p divides a number q exactly, then p, if a number p divides a number q exactly, then p is called a factor of q. Factor of q and q is called the multiple of p. A number p divides a number q exactly. कोई एक q p नंबर है, q को पूरी तरह से डिवाइड करती, then p is called factor. p जो है फैक्टर कहलाता है of q का, and q is called the multiples of p. For example, here we take p, the value of p is equal to 7 and the value of q is 28. Here p divides q exactly, 28,
7 4 जा 28. Here 7 divides 28 exactly. So 7 is the factor of 28. So we can say that P divides Q exactly. So P is the factor of Q. And Q is the multiples because 7 21. P 7 P into Q. P into natural number. P, the value of P is 7 and 4. 7 4 ja 28. So 7 is the number and 4 is the natural number. So when we divide 7 by 4, we get 28. So 28 is the multiples of 7. So if any number P divides Q exactly, then P is the called factor and Q is called the multiples of Q. In this way, we have learned how to get the multiples, how to get the factor. So we have to know some important factors of multiples and important facts of factor and multiples. Important facts factors and multiples. Important facts of factors and multiples. यहाँ पर multiples और factors के कुछ important fact है जो आपको लर्न करने हैं. फर्स्ट फैक्टर क्या है? What is first factor? 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. How? कैसे? Because 1 जो है किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है. 1 2 जा 2, 1 10, 1 10 जा 10, 1 7, 1 7 ja 7. Here we see that 1 is the divisor of all number. So 1 is the factor of every number because factor of any number divides that number exactly. क्योंकि किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है. In this way we see that 1 सारे नंबर्स को डिवाइड कर देता है. तो 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. Every number is a factor of itself. दूसरा क्या है? Every number is a factor of itself. Every number is a factor of itself. हर नंबर अपने स्वयं का एक फैक्टर होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 8 लिया. 8 is a number. When we divide 8 by 8, 8 1 जा 8. So 8 divides 8 exactly. So 8 is the factor of 8 itself. तो हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर लेती है कंप्लीटली. इसलिए हर नंबर अपने आप की एक फैक्टर होती है. Every factor of a number is exact divisor of the number. Every factor of a number is exact divisor of that number. That कोई भी फैक्टर है तो जिस
नंबर का फैक्टर होगा उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे 15 का जो फैक्टर है वो 1, 3, 5 एंड 50। ये चीज ज्यादा फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर हैं ये डिवीजर है, एग्जैक्ट डिवीजर है। 15 को डिवाइड करते हैं 1 से, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। So this is the exact division. Exact division means remainder should be 0. Here we see that remainder is 0. When we divide 15 by 3, 3 5 ja 15. So here 3 divides 15 and remainder is 0. 5 15 5 3 ja 15. 15 is exact divides by 5. So 5 is the factor. 15 by 50. 15 1 ja 15. So all these numbers divides 15 exactly. So these numbers are called divisor. So these are factor of 15. So every factor of a number divide that number exactly. Exact divisor. Next is every factor is less than the or equal to the given number. Or every factor is less than or equal to that number. Every factor is less than or equal to that number or the given number. Every factor is less than or equal to the given number. हर जो फैक्टर होता है जिस नंबर का फैक्टर होता है या तो उससे बड़ा उससे छोटा होता है या बराबर होता है। जैसे 20 का फैक्टर क्या है 1 2 5 10 20। यह फैक्टर है तो फैक्टर 1 भी है, 1 is less than 20, 2 is also factor of 20 because 2 divides exactly, 5 also divides 20 exactly and 10 also divides 20 exactly and 20 is also divides 70 exactly. So 1 2 5 and 10 these are the 5 1 less than 20, 2 less than 20, 5 less than 20, 10 less than 20 and 20 equal to 20। तो फैक्टर जो है या तो उस नंबर से छोटे होंगे या एग्जैक्ट इक्वल होंगे। सो हियर 1 2 5 10 are less than 20 but 20 is equal to 20. So factor of every factor is less than or equal to the given number. 5 is number of factors of a given number are finite. Numbers of factors of a given number is finite. Number of factors of a given number is finite. जो किसी भी नंबर का फैक्टर होते हैं उसकी संख्या जो है लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती। जैसे 8 का फैक्टर 1 2 4 and 8। So the number of factors of 8 is 1 2 4 8 except it other is not factor of 8। इसके अलावा 8 का कोई फैक्टर नहीं, इसलिए
फाइनाइट होता है, सीमित होता है, असीमित नहीं होता है, अनंत नहीं होता। 6 is every multiples of a number, every multiple of a number, every multiples of a number is greater than or equal to that number, or equal to that number. Every multiples of a number is greater than or equal to that number. मल्टीपल, किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे ज्यादा हो सकते हैं, बट किसी नंबर का मल्टीपल उससे कम नहीं होता। जैसे 5 का मल्टीपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, and this way you can get many multiples of 5. So here we see that the first multiple of 5 is 5. This is equal, but other multiple you see that 10, 15 and 20 they are greater than 5. ये 10, 15, 20 5 से ज्यादा है। तो every multiples of a number is greater than or equal to that number. किसी नंबर का मल्टीपल या तो उससे के बराबर होगा या तो उससे ज्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं। 7 the number of multiples, 7 the number of multiples, the number of multiples of a given number, of a given number is infinite, is infinite. Number of multiples of a given number is infinite. किसी नंबर का अगर हम मल्टीपल देखते हैं तो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल्स निकालते हैं तो नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट, तो वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27. In this way you can get infinite multiples of 3. So the multiples of any number is infinite. Next is every number is a multiple of itself. Okay? Every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of itself. कोई भी नंबर अपने स्वयं का मल्टीपल्स होता है। जैसे 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. In this way you can get many multiples of 7, but here is 7 भी multiple है 7 का। तो every number is the multiples of itself. So student, today we have studied about the factor and multiples, and we get more knowledge about the multiples and factors. In class 6 you have to study more about the factors and multiples. I think all of you have understood whatever has been taught here. I think all of you will be able to understand and you can solve many questions related to factors and multiples. So thanks for today. We see in next video with next topic. Thanks for today.